एक एग्जांपल देखना स्टूडेंट, द रिलेशन R1, R2, R3 as defined as on a set A. Set A equals to A, B, C as follows. R1 is A, B, A, C, B, C, B, B, C, C, A, C, B, C, C. R1, R2 is the set of ordered pairs A, A, B, B, A, C, C, and R3 is the relation having ordered pairs A, B, B, C, C, A. Find each of R1 is reflexive, symmetric and transitive. ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव हमें डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। जो फर्स्ट रिलेशन है, इट कंटेन्स द ऑर्डर्ड पेयर ए ए, ए बी, ए सी, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी। रिफ्लेक्सिव क्लियरली ए ए, ए बी, सी सी आर में है तो ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि बी is related to B is related to C and C is related to A, but B is not related to A, therefore it is not symmetric. AB है, BA does not belongs to R1, तो R1 not symmetric. इसमें भी ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि AB B C belongs to R1, CA belongs to R1, but BA does not belongs to R1, therefore it is not transitive. Now we discuss about this R2. R2 क्या है देखो स्टूडेंट, ए बी है, बी ए है, ए सी है और सी ए है। सिमेट्रिक है कि आप पहले देख इसको रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव ए बी नहीं है इसमें, ए बी बी and CC does not belongs to R2, therefore it is not reflexive. ये reflexive नहीं है। Now we discuss about the symmetric. R2 में AB और BA है, AB है, AB belongs to R2, BA belongs to R2, AC belongs to R2 and CA belongs to R2, therefore it is symmetric. Now we discuss about the transitive. Now we discuss about the whether it is transitive.
Now discuss whether it is transitive or not. R2 में AB है लेकिन BC और AC नहीं है, it is not transitive. CA है, CA belongs to R को है, लेकिन AB CA है, AB है, क्लियर? CA भी है और AB भी है, then but CB does not belongs to R2. So this is not transitive. It is not transitive. Now we discuss about the third R3. R3 क्या स्टूडेंट AB BC CA है, ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है. AB है BC है, means B, no, it is not transitive also. रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले. AA does not belongs to R3. It is not reflexive. And what about symmetric? AB है but BA does not belongs to R3, therefore it is not symmetric. It is not symmetric. The last one, number 3. Transitive. BC है, BC belongs to R3 है, CA भी है, तो BC belongs to R3 C है, तो BA होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है, but BA does not belongs to R3, therefore it is not transitive. So that the relation is congruent to show that
क्वेश्चन है देखो, शो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू the relation is congruent to is congruent to relation है is congruent to on the set of all triangles on the set of all triangles in a plane is an equivalence relation. Show that the relation is congruent to is equivalence relation. अगर relation reflexive, symmetric और trans Dear participants, please try to again for the GAT lecture. Please rejoin the session for the GAT lecture. Please rejoin the session for the GAT lecture. Sir will tell you tomorrow remaining portion. Please rejoin the session again for the GAT lecture. I am closing this session. Please rejoin again for the GAT lecture. Sir will tell you tomorrow.